Hello everyone, this is Deepa. Students, I'm again here with the same chapter 5 of History When People Rebel, 1857 and After. Student, this is the last video of this chapter but not least. It's contained very important part which is asked in the competitive examination also. So let's move. Here is the image. Here you can see Mangal Pandey, Rani Lakshmi Bai, and the sepoys who are rushing towards Delhi with slogan Dilli Chalo. And here we can see so many Britishers and Indians who are fighting. Students, we can say these peoples are the real heroes of India, and these are the heroes of revolt of 1857. Now, there are two important topics: the company fights back and aftermath. Here, the meaning of aftermath is years after revolt. What happened after the revolt? So, the company fights back means how company suppresses our Indian people and how company recaptured Delhi. The company had no way out except suppressing the revolt with all its might. It brought reinforcements from England, passed new laws so that rebels could be convicted with ease, and then move into storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison Rangoon in October 1858. He died in the Rangoon jail in November 1862. So the meaning of company fight back means कंपनी का पलटवार. जब कंपनी के पास कोई और तरीका नहीं बचा और लोग इतना उथल पुथल जो थी, तो अभी भी अंग्रेज़ों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी. उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा करके जो हमारा रिवोल्ट था उसको क्या किया, सप्रेस किया, दबाया, यानी कि कुचलने का पूरा प्रयास किया. और उन्होंने इंग्लैंड से काफ़ी फ़ौज मंगा ली और न्यू लॉज बनाए और ऐसे न्यू लॉज लेकर के आए, जिससे क्या किया उन्होंने, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको सज़ा दिलवाई. और कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पर उन्होंने धावा बोल दिया, जहाँ से लोग ज़्यादा ही रिवोल्ट कर रहे थे. और उसके बाद दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा कर लिया. और जो हमारे लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उनको आजीवन कारावास दे दिया. उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया बहादुर शाह ज़फ़र के साथ. उनके जो बेटे थे उनकी आंखों के सामने उनको गोली मार दी गई और उनकी वाइफ को और उनको दोनों को ही रंगून भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में, जिनकी मौत हो गई रंगून जेल में ही नवंबर 1862 में. Students, here I am going to discuss about a source in which Bahadur Shah Zafar wrote that कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में. Means these lines has been written by Bahadur Shah Zafar. He was a great poet and he want to say that how unfortunate is Zafar that he could not even get for his burial 2 yards of
earth in his dear homeland. मीन्स उसको अपनी ही ज़मीन पर मतलब मरने का भी मौका नहीं मिल पाया. So let's move. Here we can say what happened when Delhi was recaptured. The recapture of Delhi did not mean that rebellion died down. After that, people continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. And Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai. Tatya Tope escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war and killed in 1859. दिल्ली को वापस कब्जे में लेने के बाद विद्रोह जब ख़त्म नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि वो जो रिवोल्ट था वो फिनिश हुआ, नहीं. अंग्रेज़ों ने दोबारा से मुकाबला किया और अपनी एक पावरफुल आर्मी के साथ आए ये लोग और फिर से 2 years तक एटलीस्ट लड़ाई की. मतलब बैटल चलता ही रहा उनके बीच में और 2 years तक लड़ाई के बाद उन्होंने क्या क्या न्यू कर लिया. लखनऊ वापस छीन लिया मार्च 1858 में. रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया और उनको मार दिया जून 1858 में. ऐसा ही सेम अवंती बाई के साथ भी हुआ, उनकी भी डेथ हो गई. और तात्या तोपे जो कि भाग गए जंगलों की तरफ, उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला वॉर्स किए. और उस तरह के गुरिल्ला वॉर्स में उन्होंने काफ़ी सारे सिपॉइज़ की मदद ली और गुरिल्ला वॉर में उन्होंने काफ़ी सारे पीजेंट्स की, ट्राइबल्स की हेल्प ली. बट आफ्टर ऑल ही वॉज कैप्चर्ड and killed in April 1859. So we can say these are the victories of the Britishers. After that, here we can see a diagram of revolt of 1807. देखिए कितने ammunition हो रहा है, कितना ज़्यादा fire है. this fire depicts the fire among the peoples, fire in the heart of the people. The British also tries their best to win back the loyalty of the people. After that, what they have done, they started to take back their supremacy. They just want to take back whole administration in their hands. They announce rewards for the loyal landlords. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebel nawabs and rajas was tried and hanged. इतने सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, हमारा विश्वास जीतने के लिए ब्रिटिशर्स ने बोला कि जितने भी लोग हमारे वफ़ादार रहेंगे उनको क्या मिलेगी, उनको अपनी ज़मीन मिल जाएगी और उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो उनके पास ही रहेंगे. और जिन जगहों पर रिवोल्ट कर रहे हैं ये लोग, अगर वो लोग आकर के हमारे मतलब ब्रिटिशर्स के सामने मतलब सरेंडर कर देंगे तो उनको हम मारेंगे नहीं, वो लोग सेफ़ रहेंगे और उनके जो राइट्स हैं लैंड पर वो भी हमेशा के लिए बने रहेंगे. इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, नेवरदलेस 100 of sepoys, rebels, nawab and rajas was tried and hanged. उनको कई सारे राजाओं पर मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी पर लटका दिया. और ऐसी जो सफलता उनको मिलती रही ना, इससे उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई जब उन्होंने इतने सारे लोगों को मारने में वो कामयाब हो गए. Here we can see what happened aftermath, means what happened in the years of when after 1857 we can say. What happened after 1857? The British had regained control of the country by the end of 1859. Not with same policies.
The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of East India Company to the British Crown. All ruling chiefs of the country were assured that the territory would never be annexed in the future. It was decided that proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. So here we can see कि जो ब्रिटिश हैड रिगेन कंट्रोल, उन्होंने अपना कंट्रोल क्या किया, वापस ले लिया एट द एंड ऑफ 1859 में. बट पॉलिसीज़ उनकी सेम नहीं रही, पॉलिसीज़ आर चेंज्ड. And the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of East India Company to the British Crown. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया 1858 में, जिसके तहत उनकी जो पावर्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके ब्रिटिश एम्पायर के हाथों में दे दी गई थी, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दी गई थी. एंड जो रूलिंग चीफ्स थे हमारी कंट्री के, उनको एश्योर किया गया कि जो उनके एरियाज़ हैं, टेरिटरीज़ हैं, उनको कभी वापस एनेक्स नहीं किया जाएगा, फ्यूचर में उनको कभी वापस उनसे छीना नहीं जाएगा. एंड एक डिसीज़न लिया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से कि जो आर्मी है उनकी, इंडियन सोल्जर्स उसमें रिड्यूस किए जाएंगे और यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज़ किया जाएगा. And after that, some more policies are there. The land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British decided to respect the customary religious and practices of the people in India. Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their land. The new phase of history began. Students, when they have just decided to increase number of European soldiers in the army, after that they have decided that they will give respect to the customary religious and social practices also, because they felt that this was a burning issue for the revolt of 1857, and they decided that the Muslim was the peoples, because of them they the revolt of 1857 happened. So ड्यू टू द सस्पिशन, शक की वजह से उन्होंने उनके जो एरियाज़ थे उनको कॉन्फिस्केट कर लिया, उनकी जो संपत्ति थी उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया, मुसलमानों की ज़मीनों को. और उसके बाद डिसाइड किया कि कस्टमरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो कभी नहीं छेड़खानी करेंगे हमारे रिलीजन्स के साथ. और उन्होंने जो भूस्वामी थे, जो जमींदार थे, उनसे ये कहा कि अब उनके अधिकारों को नहीं लिया जाएगा और क्या किया जाएगा, ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिससे वो लोग खुद को सेफ फील कर सकते. तो वी कैन से दैट 1857 के रिवोल्ट के बाद एक हिस्ट्री में न्यू फेज स्टार्ट हो गया. हियर वी कैन सी the sites of revolt of 1857 and the area under Sepoy's mutiny. Student, this is very important map work in which you have to just find out the some of the areas like important centers of the revolt. So you can see it that Bareilly, Lucknow, Meerut, Awadh, Allahabad, Patna, these are the major areas, Satara, where revolt of 87 held. And here you can see these are the British rule in India during 1857. These are the line which is marked by orange color. We can see that area under the revolt of 1857. Most of the peoples from this area took part in that revolt. So main centers of revolt of 1857 are Kanpur, Lucknow, Bareilly, Arad, Jhansi, Gwalior and Barakpur.
and some other parts are also there. Parts of Bengal, Rajasthan, Assam, Madhya Pradesh, and Punjab, mostly part of northern India and central India. Most of the peoples from northern India and central India has taken part. So students, when you have read this chapter, when you have learned about revolt of 1857, I think one question should raise in your mind, that how were just 10,000 British officers able to hold down a nation of millions of the people? मीन्स ये 10,000 ब्रिटिशर्स ने मिलकर के हमारे पूरे भारत को गुलाम बना दिया, इसके पीछे कोई रीज़न? सो स्टूडेंट, यस, reasons for the failure of the revolt. The first reason is lack of unity among the Indians. How I can say this? Because the many peoples like Sindhia of Gwalior, Nizam of Hyderabad, and Holkar of Indore gave active support to the Britishers, and most of the peoples from South India and Western Punjab stayed out of the rebellion. They haven't took part in that rebel. And in areas of Punjab, and the people were happy with the efficient administration of the Britisher and did not join the revolt. बहुत सारे लोगों ने revolt को join भी नहीं किया. And we can say that many of the Indian rulers and the big zamindar refused to join the rebel. बहुत लोगों ने तो मना ही कर दिया. So we can say that the revolt did not involve the entire region or all section of Indian society. So this was the we can say the major reason behind the failure of the revolt. And most of the educated westernized Indians didn't support the revolt. They thought in their eyes India needed the British. Why? They felt only the British could take India forward and rid of the various social ills that had plagued it. We can say the rebel, on the other hand, opposed the social reforms started by the British. जैसे कि इवन यू हैव आस्क्ड ना कि मैम सती प्रथा तो स्टूडेंट्स अच्छा किया उन्होंने बंद कर दी, जो वीडो री मैरिज एक्ट को लेकर के आए अच्छा किया उन्होंने. सो सेम थिंकिंग वॉज ऑफ द वेस्टर्न इंडियन पीपल्स ऑल्सो. And second, another reason behind this failure of the revolt, we can say lack of national leader. There was no single leader who could unite the various groups. Right? We can say that common peoples like peasant and artisan, the story was no different. Why? Because in this revolt, we can say in the French Revolution, we will talk about French Revolution. You haven't read about this. In your ninth class, you will learn about French Revolution. In the French Revolution, we can say there is great thinkers who inspired whole peoples like Rousseau and Voltaire. And but in India, there was no national role model is there with the progressive thinking to look up. And after the revolt of 1857, we can say there are some leaders like Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, and Nehru. So they were the leaders who have become role model of the peoples. And third reason behind this is lack of resource. Yes, we can say that Bahadur Shah Zafar, who was old and weak leader, we can say he was unable to lead that revolt. And after that, instead of that, people had decided that he will be the leader of their side. And lack of resources is the third reason we can say about the failure of the reasons. Like we don't have that much good quality of weapons like Britishers have. The rebel could not match the modern weapon and material of war used by the Britishers.
They were brave and fearless but lacked organization and discipline. Peoples are brave. We can't say that Indians were not brave. The British had a railway at their disposal and excellent system of communication also. So troops could be moved quickly and decisions taken fast. हमारे पास जो वेपन्स थे, जो हमारे पास जिनसे हम फाइट कर रहे थे, जो मटेरियल ऑफ वॉर था वो भी बहुत प्रॉपर नहीं था, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे हमारे पास, इसलिए भी हमारा फेलियर हुआ. Now let's move what happened. What are the results of revolt? So students, after this revolt, we can say in India, in among the peoples, the greatest consequence we can say of the revolt was the rise of a feeling of nationalism in India. It was a turning point in the history of India freedom struggle. It united the people of all parts of India. So the rise of nationalism is one of the reason, one of the result. In second one, we can say the reorganization of the British Empire in India. Like India was brought directly under the crown. Earlier it was under the East India Company, and the Governor General was now henceforth known as the Viceroy. Right? And reorganization army, we can say the British replaced sepoys who were Brahmins, Rajput, those from Awadh, Bihar and central India with peoples, Gorkhas, Sikh, Pathans. And these people have proved their loyalty to the British during the revolt. And the artillery, we can say the artillery was put completely in the British hands. सारा कुछ किस ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया. And third result, we can say the consequence and the outcome of this revolt, we can say Queen Victoria's proclamation. In this, she said in 1858 that unconditional pardon to all rebel except those who had killed British people. जिन्होंने British peoples को मारा है उनको छोड़कर सबको माफ़ किया जाता है. And now Indian prince were assured their rights, dignity and honor. उनको पूरा मतलब अधिकार मिलेंगे, उनको इज्जत मिलेगी, ऑनर मिलेगा और उनकी रिस्पेक्ट होगी. एंड विद दिस एक्ट द ब्रिटिश बॉट द ग्रैटिट्यूड एंड लॉयल्टी ऑफ द प्रिंसेस. बहुत थैंकफुल हो गए और मतलब ओबलाइज्ड हो गए एक तरीके से, और ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया. And after the revolt, British attitude towards India was changed, and British decided to stay away from social reforms. Was seen as one of the major cause of the revolt. उनको लगता था कि शायद इसी वजह से जो सोशल रिफॉर्म वो करा रहे थे, इसकी वजह से लोग भड़के और इसलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ. एंड नाउ लास्ट वन, टेनेंसी एक्ट. कुछ पॉलिसीज़ लेकर आए ब्रिटिशर्स हम कह सकते हैं, जैसे कि बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसमें इन्होंने क्या किया, इनको पता चला कि जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी उससे इंडियन पीजेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं. तो इन्होंने ट्राई किया टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड स्टार्टिंग दैट एनी पीजेंट हु कुड प्रूव दैट ही हैड ऑक्युपाइड अ पीस ऑफ लैंड फॉर 12 years वर ग्रांटेड टेनेंसी राइट एंड कुड नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड. उसकी ज़मीन जब्त नहीं की जाएगी, उसकी ज़मीन से उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा, जिसके पास भी 12 साल से वो ज़मीन है. और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना स्टार्ट किया. दिस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. और फिर आगे आने वाले जितने भी वाइसरॉयस आए उन्होंने हमारी कंट्री में डेवलप किया, थोड़ा स्कीम्स लाए टू सेवरल स्कीम्स टू डेवलप द कंट्री, है ना. they put some schemes to develop the country and some projects to provide irrigation facilities, sanitation and communication, and famine relief was started, and so many schools were opened. So these are the some of the good policies, we can say good policies which is adopted by Britishers. And most important outcome of revolt was India passed on to the crown from the company. और कहाँ चला गया, कंपनी का रूल हटके ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गए हम लोग. So this is all about your chapter. I hope you have learnt everything and I have explained this chapter thoroughly, students.
If there is a problem, you can ask me. I love to solve your queries. Thank you very much for patient hearing. Thank you very much.